हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है एक वीडियो की। अम, अभिजीत चावड़ा जी की वीडियो है जिसमें कोई 7 ईयर डेवस्टेशन ऑफ मणिपुर की बात हो रही है इन इन द हैंड्स ऑफ बर्मीज एम्पायर। आई थिंक लेट अर्ली मॉडर्न टाइम्स के आसपास हुआ है ये। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। आई गेस मैंने सुना भी पहली बार है कि ऐसा कुछ हुआ था। मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस बारे में, वो मैं बाद में शेयर करूँगा। वीडियो देखते हैं पहले। Can you please talk about the 7 years devastation of Manipur and Assam by the Burmese from 1819 to 1826? Many people don't talk about this. It's not even included even in our history books. Even people in the Northeast don't know properly about this tragedy. It is said to be the equivalent of the Holocaust, while the Burmese have always been portrayed as a peace-loving society, and so on and so forth. Right? यार Okay. मुझे भी The 7 years इन्हीं ने ही तो नहीं की devastation थी of रिक्वेस्ट। Manipur. Chahi Taret Kuntakpa. That's what they call it. From 1819 to 1826. So this was a terrible, terrible time. 7 years of complete devastation of Manipur at the hands of the Burmese Empire or kingdom. Right? कोई और है। So what is this? What happened there? So to understand what happened, you have to go back. I always go back a couple of centuries in time. So let's go back just a little bit. It all begins, so to say, with the Manipuri king Pamaiba. So Pamaiba is considered to be the most successful conqueror in the past 1000 years in Manipur, right? Uh, he was the son of Pitambar Charairongba. So Pamaiba ruled from about 1690 to about 1750. And he is the king who introduced Vaishnavism as the official state religion of Manipur at the behest of, what was his name? Some Bengali preacher. So what he did was he introduced Gaudiya Vaishnavism, the Bengali form of Vaishnavism, as the official state religion of Manipur. And he indulged in multiple military conquests. He was a very successful conqueror, Pamaiba. His kingdom spanned from the Iravadi River in Burma in the east to Kachar in Tripura in the west, and it also included the so-called Chittagong hill tracts, which are currently in Bangladesh. जिन लोगों को नहीं पता, इरावदी रिवर एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है बर्मा की। वो बर्मा को नॉर्थ से साउथ में काटती है, ऑलमोस्ट बीच में से। इरावदी के ईस्ट में लाइक कह सकते हो 40% ऑफ बर्मा पड़ता है। तो अगर उनका एम्पायर इतना बड़ा था, ईस्ट ऑफ सॉरी इरावदी रिवर के वेस्ट में पड़ता है 40% ऑफ बर्मा अप्रॉक्सीमेटली। शायद थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ मैं। और अगर इनके हिसाब से ये जो एक किंग थे पमाईबा, इनका अगर एम्पायर ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ इरावदी रिवर था तो ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम बर्मा उनके अंडर ही था। Right? So he was one of the most successful military conquerors of Manipur in the past 1000 or so years. He also introduced Vaishnavism as the official state, Gaudiya Vaishnavism uh, as the official state religion in Manipur, which kind of in some sense transformed the Manipuri society from a society of warriors to a society of people who kind of looked at other things with yeah, that sort of thing, into a more peace-loving society. There's nothing wrong with it being peace-loving, but it kind of softened up Manipuri society. This specific form of Vaishnavism, Gaudiya Vaishnavism. Now, what happened is that when Pamaiba died, the succession went wrong. He had a good son, a capable son, whose name was Shyamasai. But this Shyamasai was assassinated by his own brother Ajit Sai, and there was this squabble for succession, and there was a lot of political instability. Eventually, the assassinated son's son, which was the grandson of Pamaiba, whose name was Chingthang Khomba, became the king of Manipur. He was a very good king. He ruled for about 50 years. He was known as Rajarshi Bhagyachandra. He introduced, Manipuri classical dance and a great deal of culture and all that. And then after the deaths of Bhagyachandra, you had a couple of kings who came on, who ruled, who were not that good as rulers and so on. And then the Manipuri king kind of became a vassal of the Burmese,
And then there was a new Burmese king who came to power. He ordered the Manipuri king to attend the coronation. The Manipuri king refused, and in retaliation, the Burmese king sent an army, invaded Manipur, conquered Manipur, and then there was 7 years of devastation in which at least 5 lakh Manipuris were murdered, 500,000, and another. या भाई, इसको जो जी से वर्ड है वो कहने के लिए बिल्कुल काफ़ी है ये, जिसका एंड होता है साइड से। थोड़े से मेरे को क्वेश्चन उठ रहे हैं जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहली चीज़, ये किस टाइमलाइन में हुआ है, किस सेंचुरी या किस सन में हुआ है, और दूसरा ये कि क्या ये इस कॉन्फ्लिक्ट का बेस क्या था? सिर्फ पावर बेस था? बट सिर्फ पावर के नाम पे ऐसा नहीं होता। जब भी आपको किसी का कब्ज़ा करना होता है, कत्लेआम करना होता है, तो या तो वो रिलीजन के नाम पे होता है या अपनी सेफ्टी के नाम पे होता है, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है उसके लिए। तो क्या वो बुद्धिस्ट थे उस टाइम पे और ये वैष्णव, कौड़िया वैष्णव थे, इसके बेस पे उनकी लड़ाई हुई, या किस आइडियोलॉजी के बेस पे लड़ाई हुई? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त। At least another 3 lakh Manipuri men, women, children were taken as slaves into Burma. And today their descendants would still live today. And lots of Manipuris had to escape from Manipur and go into Assam and even Bengal and all. And that gave rise to the Bishnupriya Manipuris and all that. So it was a terrible period, 7 years of complete devastation. The Burmese tried to eradicate the Manipuri people completely. Because Burma and Manipur had been at war from time to time in a cyclic manner for centuries, and the Burmese wanted to completely eradicate Manipur as a threat forever. So they tried to essentially conduct genocide in Manipur. Imagine, Manipur is a small place. Do we even know where Manipur is? Let's take a look at the map. ओके, मणिपुर एक स्मॉल स्टेट है आज के टाइम में, बट अगर इरावदी रिवर के वेस्ट का सब कुछ मणिपुर के अंडर था, तो मणिपुर इज, सो दैट मीन्स दैट मणिपुर यूज टू बी अ ह्यूज स्टेट, और उसको बर्मा ने लाइक रिड्यूस कर दिया जो अभी के टाइम में है उसमें, और उसके बीच में फिर अंग्रेज़ आए और फिर इंडिया के बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी ऑफ कोर्स इन दोनों चीज़ों के बीच में। ओके, लोकेशन है मणिपुर की नागालैंड से साउथ में, वो मिज़ोरम से नॉर्थ में कह सकते हो, नागालैंड और मिज़ोरम के बीच में, और उसके ईस्ट में पड़ता है बर्मा का बॉर्डर, पूरा का पूरा लगता है, और एक साइड वेस्ट में आसाम। Let's take a look at the map and see where Manipur is. Where is the map? अगर मेरी सेंसेस अभी भी ठीक से काम कर रही हैं तो here is the map. So let's go here. Okay, so Nagaland if you और can मिज़ोरम के बीच see, में, नॉर्थ साउथ। this is the city of Imphal, which is the capital of Manipur. And जो to border the इसके इस east साइड you से आ have रहा है। Burma. To the south you have Yangon, Yeah. Rangoon, and so on, Mandalay, a major city. देखो, आप देखोगे ना तो ये जो बीच की एक बहुत बड़ी नदी जैसी सी एक वाटर बॉडी की लाइन जाती हुई दिख रही है ना, यही है इरावदी रिवर। पूरा का पूरा 40% के आसपास उसके ईस्ट में आता है। And then you have the great Iravati river, which I believe is this. Here it is, the Iravati. We call it the Iravadi. So that's the region we are talking about. So the Burmese invaded Manipur. They occupied Manipur for 7 years. They killed at least 500,000 Manipuris, took another 300,000 plus Manipuris as slaves, and devastated the place. What they would do is they would put Manipuri men, women, and children in an. यार ऑन अ साइड नोट, ब्रह्मपुत्र, ये जो बड़ी वाटर बॉडी की लाइन दिख रही है ना जो ज़्यादा थिक है ब्लू में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और क्या ह्यूज है यार ब्रह्मपुत्र रिवर। Enclosed house or something, shut them inside, and then burn chilies and suffocate. आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी इसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है। बट एनीवे, ये क्रूअल्टीज़ के बारे में बता रहे हैं क्या क्या हुआ उनके साथ। Them by burning the chilies and kill them that way. So very, ओ very भाई साहब, नाजियों का गैस चैम्बर उन्होंने उसी टाइम पे इन्वेंट कर दिया था। brutal kind of occupation, which lasted for 7 years. Eventually, what happened is that the king of Manipur, whoever was the king at the time, he brought in the British. Right? So the British got involved in this. Then there was the first Anglo-Burmese war, I think in 1824 or something. तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कब हुआ था। ये आई गेस मेरा गेस ठीक था, ये अर्ली मॉडर्न एज में हुआ है, जस्ट अंग्रेज़ों के आने से पहले, यानी कि 1700s के आसपास।
and eventually the British got involved because of this. So Manipur was freed from the Burmese. The Manipuri king had to become kind of a vassal of the British. The British were already ruling other parts of India at the time, सेम टेक्निक. especially Bengal. Bengal is the first colonized place in India, and the effects are still visible. वैसे मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है इनका ओरिजिन कहाँ से है अभिजीत चावड़ा जी का, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि छाबड़ा होते हैं वो पंजाबी होते हैं और चावला होते हैं वो भी पंजाबी होते हैं, तो ये पर इनके एक्सेंट से मुझे लगता है शायद ये बंगाली हैं, बट एनीवे. So that's how the British got involved, and eventually in 1891 there was the Anglo-Manipuri War, which the Manipuris lost, and Manipur was totally destroyed from there onwards. So the Manipuri royal lineage was destroyed, and a puppet king was put in place, and Manipur became a princely state, and today's so-called Manipuri kings are descendants of those puppets. That's how it is. Every single princely state in India was in some way, or some shape or form, a collaborator with the British. Yeah. So that is what happened, and that is in brief the story of the 7 years devastation of Manipur, which was a disastrous period, and which changed Manipur forever. Chahi tarat kuntakpa. So that's what it was. Can you please talk? Okay, मुझे नहीं लगता ये 7 year devastation है जो इन्होंने बताया, उससे मुझे लगता है कि ये hundreds of year devastation है, या जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगर वो हज़ारों सालों से उन पे किसी न किसी तरीके से अत्याचार करते आ रहे हैं, हो सकता है कभी ये पावरफुल हो जाते होंगे, पुश बैक कर देते होंगे, कभी बर्मीज़ लाइक, और क्योंकि वो बड़ा स्टेट था आई एम गेसिंग, तो सफल हो जाते होंगे. अच्छा, मैं एक पर्सनल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था. बेसिकली मैं एक जगह काम करता था, वहाँ मेरे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त बने, नागालैंड से, मिज़ोरम से, मणिपुर से काफ़ी ज़्यादा. मणिपुर से उस जगह पे मुझे ज़्यादा लोग मिले, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीज़न. आई थिंक मणिपुर की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है नागालैंड और मणिपुर और मिज़ोरम के बीच में. तो और नॉर्थ ईस्ट का ये है कि ना हर छोटे से गांव जैसे एरिया में भी ना एक डिफरेंट ट्राइब है, जनरली एक्सेप्शंस हो सकती हैं, और उस ट्राइब की एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, उनकी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं क्या कुछ होता है. तो थोड़ी सी दूर में जाके लैंग्वेज वहाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है. ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने उन लोगों से सुना है वो मैं शेयर कर रहा हूँ. और वहाँ पे एक बर्मीज़ लड़की भी काम करती थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो बर्मीज़ है. वो अपने आप को कहती थी मैं मणिपुरी हूँ, लेकिन जो मेरे मणिपुरी फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बताया था कि शी इज़ एक्चुअली बर्मीज़. वो लड़की मुझे आई डोंट नो थोड़ी सी, या तो वो शायद थी या तो वो थोड़ी सी लाइक मंदबुद्धि वर्ड यूज़ में नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी लाइक शायद शांत होगी बहुत ज़्यादा, वट. तो जो मणिपुरी थे वहाँ पे, जिनके बारे में आई मीन उनका ग्रुप था पूरा, तो उन लोगों ने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की एक्चुअली मणिपुरी नहीं है, वो एक्चुअली बर्मीज़ है. बट उस लड़की को, जो बर्मीज़ थी, उसको अगर कोई भी कुछ भी काम, हेल्प, कुछ भी बात करनी होती थी तो वो मणिपुरीज़ के पास ही जाते थे. तो आई गेस उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी एट सम लेवल म्यूचुअली इंटेलिजिबल है, इफ़ नॉट फुली. और ये मैं इसके कॉन्ट्रास्ट में बता रहा हूँ कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में ज़ुबान चेंज हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए. तो एक कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन है, बट हिस्ट्री में चाहे वो विशेष रहा हो, लेकिन उस जगह पे जहाँ मैं था वहाँ वो काइंड ऑफ सपोर्ट लेती थी उनसे. बट आई डोंट नो वो उसे लाइक करते थे या नहीं, अदरवाइज़ वो शेयर नहीं करते उसकी असलियत.